Very good afternoon to everyone. So today's topic is all about the benefits and how you can make your pregnancy easy by the antenatal session, and how the antenatal sessions help you to ease out your pregnancy journey. So pregnancy sunte hi we have so many people around to care about, and there are so many myths is all around and so many questions to the new mom also. प्रेग्नेंट हो, आज से 2 लोगों के लिए खाना है और अभी से 2 लोगों के लिए खाना है. सेकेंड, प्रेगनेंसी है, कौन सा 7 मंथ चल रहा है, नीचे नहीं बैठना है स्क्वेट पोजीशन, नहीं तो बच्चे का हेड फ्लैट हो जाएगा. इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी एडवाइसेस हैं जो जैसे ही एक न्यू मॉम को के लिए सब लोग, देयर पीपल अराउंड जो सबको एडवाइस देने के लिए आते हैं. एंड इट मेक्स यू एट द एंड ऑफ द डे इट मेक्स यू सो कंफ्यूज कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है. So hi, I am Dr. Neha Gaur. I am a physiotherapist and your antenatal educator. It has been a 17 years, more than a 17 years experience in this field. So we just thought to have the awareness about how these programs, how the antenatal exercises help you for your healthy and fit journey for the pregnancy. सो आज का टॉपिक उसी चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए पूरा सुनिएगा. कोई भी अगर आपके साथ ऐसी कुछ एडवाइसेस हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, या आपके साथ है जो मिथ आपके साथ आपको लगता है, तो प्लीज़ राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड विल ट्राई टू गिव रिप्लाई एट द एंड ऑफ द सेशंस. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रीनेटल सेशंस and if we talk about the pregnancy journey, so it comprises of the 3 trimester, as we all know: first trimester, second trimester and the third trimester. First trimester comprises of your first to the third month, and your second trimester including your 4th month till the 6th month, and the last trimester is from 7th month to the 9th month. This is a general outlook for the pregnancy डिवीज़न ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी. सो अभी क्या है, जब आप प्रेगनेंसी है तो देयर आर सो मच ऑफ मेंटल हेल्थ इज इन्वॉल्व इनटू दैट एंड अ फिजिकल हेल्थ. व्हाई? बिकॉज अ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम एक लेमन में बोल सकते हैं एक प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है, इट इंक्रीजेज इन योर बॉडी, which is a culprit behind of everything what is happening the new for your body. Like if you have first 3 months, many of us faces the nausea, we talk about the mental health, we face the mood swings. So this is all because of the hormonal imbalance and hormonal changes occurring in our body during the pregnancy. तो उसी चीज़ के लिए हम जब एज अ मॉम, एज अ इंडिविजुअल वी गेट कन्फ्यूज कि व्हाट इज हैपनिंग टू अ बॉडी, तो वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू एनीबडी एल्स ऑल्सो कि व्हाट इज हैपनिंग टू अस, बिकॉज इट्स अ न्यू जर्नी, इट्स विल बी अ न्यू symptoms, it is a new feeling after getting pregnant, because of this hormonal imbalance, or we can say hormonal activities, new activities going under inside our body. So अगर हम बात करें तीनों ट्राइमेस्टर की कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि हाउ दीज एंटीनेटल सेशन ईज आउट योर प्रेगनेंसी जर्नी. तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स की. फर्स्ट 3 मंथ्स व्हेन आवर प्रोजेस्टेरोन लेवल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन आवर ब्लड, जब आपको पता लगता है कि यू आर प्रेग्नेंट बाय इवन यू टेस्ट इट एट होम और बाय थ्रू द ब्लड टेस्ट, हमारा जो हार्मोन लेवल है वो इट स्टार्ट इंक्रीजिंग. उसकी वजह से व्हाट आर द चेंजेस वी generally find in our body is, like, first of all, if we talk about the nausea, it depends to the individual to individual. It's not mandatory to have the same symptoms to the one person is having and another also having the same symptom.
So if we talk about the physical health, we find it like we feel more lethargic, more weak sometimes. We find like mood swing, a strong mood swing. कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ चीज़ नहीं अच्छी लग रही है. जो चीज़ आपको बहुत पसंद थी, you start distracting from the same thing. You feel low. You don't know when you have to cry. You just cry. मतलब it's such a unexplanatory things which is going inside the mother body, which cannot be explained to anybody. And we already, and the nauseatic things, you have a morning sickness, very common. And sometimes you have some aversions from the certain food items, and which we used to be like in our normal days. So these are the things which we generally faces when we get pregnant in the first 3 months. And for how these now, first we are talking about the first third month. So how these exercises or this antenatal session help us in the first third month. See, when I already explained you ki what are the things which is going inside the mother's body, and the hormonal imbalances are going on. So that time we need to have our mental health on the priority. For that, we need to concentrate more on the breathing exercises, our meditation part. There is a program in Garbh Sanskar is there, in which we encourage a mother for certain chantings. We encourage a mother for first 3 months to rid of those anxiety and rid of those hormonal imbalances occurring inside the body. We more concentrate on the meditation part, on the chanting part, on more focus on the breathing part. And we always encourage a mother to live a normal life. See, pregnancy is not a disease. Pregnancy is not a disease. It's a normal phenomena and occurring inside the body. So the mother should understand that thing first. And the family members also should understand that thing first. It is not any disease or anything which is happening with you. It's a very natural phenomena, which it will be a temporary thing which is happening inside your body. So for that, first 3 months, the anxiety part has to be controlled. You have to be stress free, you have to be calm, and you have to be in your normal daily living. You don't have to eat for two. It is some which you are eating in your normal days. You have to eat whatever it easily digestible to you. You can go for your walks, you can listen to a good music, you can go for anything which you want to do. If it is whether it is you liking it or not, you just try to indulge yourself and try to distract from your things which is actually bothering you, like I'm pregnant or what thing. So this is the things when we join certain type of classes under the expert, you get to know how to deal and how to cope up with all these kind of anxieties and the problems which you are facing and which are so new to you. So second trimester, now we'll come to the second trimester, that is start from the 4th month till the 6th month. These trimester actually known as the golden period of the pregnancy. See, first 3 months, all the hormonal imbalances, the new things which is going on, so you are still confused, nauseatic is there, sometimes the morning sickness is there. It all started subsiding during when you entered into the second trimester. So for that second trimester, we need to start preparing our body. We need to start preparing our body for the third trimester and for the natural birth. And okay, one thing more I want to add in between this. Generally, when the patient or a mother, I should not use the word patient, as I told, pregnancy is not a disease. When the new moms approach us, the first question they ask us ki whether we'll get the natural birth by joining these classes. See, natural birth के लिए ही हमारी body prepare होती है. It's a very common, by default the God has it has make our body in that way कि आपकी body जो है वो 9 month में एक natural birth के लिए ही prepare होती है. Body को really don't know कि whether we are going for the cesarean or the normal birth.
एक जो नॉर्मल बॉडी के चेंजेस होते हैं, एक बॉडी नॉर्मल होते हैं बाय डिफॉल्ट, इट हैज़ बीन डिजाइंड इट लाइक इट ओनली, कि वो एक नॉर्मल नेचुरल बर्थ के लिए ही होती है. सिजेरियन होना या सी सेक्शन होना, it depends on the certain indications are there on your last trimester. I will be discussing it about it a little in the last trimester when we're talking about the third trimester. So it is not the mandatory. Please don't go for this thing कि we have the natural birth, we have to go for the natural birth or a normal delivery, then only we going to attend these antenatal sessions or will go under some expert. No, that is wrong. See, कुछ हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिजिकल जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं विच क्रिएट सम काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी जर्नी, which cannot be cured by the medicines, which only cured by the exercises or some kind of lifestyle changes during the pregnancy under some expert. So that has to be there. So that has to be take care in your mind. Keep, and very importantly, which I can say I have experienced by myself and with my clients also, post delivery the body recovers so well when you exercise or when you have some expert the antenatal sessions during your pregnancy. It will ease out your pregnancy, and it will help you to cope up with the anxieties and the things into that. So now we will be talking about the second trimester problems, what we will be going to face during the pregnancy is first we talk about the backache, right? This is a very common thing which I think 70 to 80% of the females suffers the backache during the pregnancy. It occurs, the common root cause of the backache during the pregnancy is because of the defaulted or a faulted posture, a wrong posture adapted by the pregnant women. See, you can go to my YouTube channel by the name of Heal to Fit, where I have uploaded my the correct postures of in standing, lying, and in the sitting posture during the pregnancy. So you can go and you can watch what is the correct posture. But because we cannot cover the whole thing in a short period of the live sessions, so the correct posture should be there to avoid certain kind of back problems or certain kind of muscular pains during the pregnancy. So that first thing which we have to care, and we teach the moms about it, so that जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, जब ऑलरेडी बॉडी वेट बढ़ जाता है और आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है कि इट इज़ सो डिफिकल्ट टू टर्न टू द अनदर साइड ऑन द बेड और टू get up from the floor. These are the things which we start preparing your body. If we start preparing, or you can say we can start what you can say, but we are exercising or certain group of muscles which we can start making it more fit for the labor. So these exercises during the second trimester and correct posture technique, if we start adapting from the initial starting of the pregnancy, it will ease out our problems when we actually facing the problem because of due to the increased weight of the baby and your body weight. So these are the things which we have to go under some expert to know about it. See, होता क्या है, जो हमारा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन है, उसकी वजह से हमारी सारी मसल्स जो है लैक्स हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत इजीली हमें मस्कुलर क्रैम्प्स आना, मस्कुलर पेन्स होना, दीज आर द थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन. सो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट इन सब चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय joining the antenatal session or by having the expert knowledge during the pregnancy. So this is very important. And the very important
these antenatal exercises or lifestyle changes or diet counseling, because it will help you in your third trimester in preparing your body and your certain group of muscles which has been used, which will be using it, we will be using it during the labor table. So that, like adductors are there are certain group of muscles of the lower body which we needed to use during the labor and which enhance our labor natural birth, which will help you to enhance your natural birth, and आपका जो labor वाला time है उसको ease out करता है. उन सब चीज़ों के लिए you have to take a guidance, and which these antenatal sessions are very very important and useful to you. Second thing, we talk about the diet. अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो इट जनरली केम अक्रॉस टू मी, इसकी प्रोटीन लोडिंग. कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी सुनते हैं, सबसे पहले हमें एडवाइस हमारे फैमिलीज से एडवाइस मिलती है, सुबह सुबह प्रोटीन खाना शुरू करो, लोडिंग करना शुरू करो, बस आपको प्रोटीन खाना है, आपको 2 के लिए खाना है. नो, आपको सिर्फ उतना ही खाना है जितना आपको डाइजेस्ट होता है. प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है, बेबी का वेट बढ़ाना है, अपना वेट नहीं बढ़ाना है. तो स्टार्ट अवॉइडिंग, इफ़ यू से कि इफ़ आई एम ईटिंग, आई कैन ईट एनी थिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मुझे शुगर क्रेविंग है, ईट सेंसिबली, ईट माइंडफुली, लाइक चूज करेक्ट फूड एट करेक्ट टाइम इन करेक्ट क्वांटिटी, जिसकी वजह से आप ओवरवेट नहीं होंगे. तो आपका डिलीवरी का जो टाइम है, जो आपका लेबर है, वो इजी रहेगा. थर्ड ट्राइमेस्टर आपके लिए कोप अप करना इजी रहेगा, बिकॉज उसमें ऑलरेडी वेट इंक्रीज होगा, विच विल बी इफेक्टिंग योर जॉइंट्स, बिकॉज सारा वेट आपके लोअर जॉइंट्स पे आएगा. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप पोस्ट डिलीवरी आपका वेट लूज करना, आप दोबारा अपनी बॉडी में आना, वो आपके लिए इजी होगा इफ यू नॉट पुट ऑन द एक्स्ट्रा किलोज which is not required during the pregnancy. I'll tell you guys, we should be including the 12 kg. We should increase only 12 kg during the pregnancy, जिसमें से 5 kg after the delivery immediately shut down हो जाता है. It includes 1 kg of your placenta, 1 kg of your breast tissues, 2.5 to 3 kg of your baby weight. So these are the things which we generally shut down immediately. But जो आप extra kilos अपने junk food, या if you can say you eat without a guilt during the pregnancy, please don't do that. It should be प्रोटीन लेना है, मॉर्निंग में लोडिंग करेंगे. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई ज़रूरत नहीं है. बेबी का वेट भी इंक्रीज करना है, बेबी को हेल्दी करना है, खुद को हेल्दी करना है. अ हेल्दी मदर कैन गिव बर्थ टू अ हेल्दी एंड अ फिट चाइल्ड. तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को एक एक्सपर्ट के अंडर में प्लीज़ टेक अ गाइडेंस. विदाउट, अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन वेरी फनी मिथ, आई थिंक आप सब ने सुना होगा, पॉमीग्रेनेट नहीं खाना, जिसको हम लोग अनार कहते हैं. अनार खाने से बच्चा काला हो जाएगा. आई वॉज लाइक, अनार खाने से बच्चा काला कैसे होगा? बट येस, आपका आयरन जरूर बढ़ा देगा. तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ कि यही बात कि प्लीज़ डोंट फॉलो एनीबडी ब्लाइंडली, और don't go behind these myth. Have some logic, have some expert जिससे आप एडवाइस ले सकते हैं. प्रेगनेंसी में हर चीज़ की दवाई नहीं खा सकते हैं. लेग क्रैम्प्स हैं, बैक एक की हमने बात करी अभी. there are some cosmetological problems with generally females faces, like pigmentation and hairs, more of the hairs on the facial hairs and all. This cannot be avoided, which it differs from pregnancy to pregnancy, but it cannot be avoidable. But yes, it can be minimized by under some antenatal session and by avoiding this. Because you know what happened when you come to the group exercises, or when you under some expert about it, it will give you the more of the light toward the this beautiful journey. आप एक वो एंजाइटी और बहुत सारे कन्फ्यूजन से बाहर रहते हैं. आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है, एंड दिस इज कॉमन, दिस इज टेम्परेरी. देयर आर सम nerve issues sometimes. The pregnant woman says there is one carpal tunnel syndrome is very very common, जिसमें नर्व हमारी इम्पिंच हो जाती है, नाइट बर्निंग रहती है, पेन्स इन द रिस्ट. द मदर समटाइम्स से
you go for n number of the test over there. Your family is in an anxiety, क्या हो गया, nerves में कुछ हो गया, क्या हो गया, हाथ नहीं उठ रहा है. So if you go under some expert and these exercises, these stretches of the nerves and all, it can minimize all your worries and your problems. तो ये तो हमने बात करी कि क्यों सेकेंड ट्राइमेस्टर इज अ गोल्डन पीरियड एंड वाई वी शुड गो. बिकॉज एक बहुत और एक कॉमन चीज़ है जो हमारे पास जितने भी वुड बी मदर्स आती हैं, वो हमारे पास जनरली 7 मंथ में भी आती हैं. एंड समटाइम्स गायनी ऑल्सो सजेस्ट ड्यूरिंग द 7 मंथ एंड दे आस्क्ड फ्रॉम योर गायनी कि मैम कोई एक्सरसाइजेस करे क्योंकि 7 मंथ में आपको दिक्कतें फील होनी शुरू हो जाती हैं. When that time I always say to my clients or would be mothers कि you should come under the expert or some antenatal session or exercises from the 4th month onwards only. Why it is so? Because 3rd month में already आपका weight gain हो चुका है, आपको खुद को अपने normal lifestyle को करने में दिक्कत है. तो how you can expect to do the and train your muscles that time? So it is better to start your journey of this healthy journey, or we can say a prenatal exercises journey, from the 4th month onwards. And one more thing I should say to everyone, the walking is just a type of exercises. It is not a complete exercise which can fulfill your all the problems during the pregnancy. So it's just a type of exercise. It can increase your stamina and endurance, but it cannot fulfill all your things, problems like of the muscular problems, which has to be go under the some deep stretches of the particular muscles which you are going to use during our labor. तो इसलिए हर एक्सरसाइज का अपनी एक इम्पोर्टेंस है, हर एक्सरसाइज हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंट है. तो डोंट जस्ट मिक्स या द वॉकिंग, और जनरली ये कि हम वर्किंग हैं तो हमारा तो स्टेयर्स क्लाइंबिंग ऑलरेडी बहुत हो जाता है. नो, जैसे मैंने आपको बताया सारी मसल्स हमारी ढीली पड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. तो हमें वी नीड टू ट्रेन दोज मसल्स, वी नीड टू स्ट्रेच दोज मसल्स टू get them function more easy and helpful during your natural birth or your labor. Now we'll come to the 3rd trimester. See, आप अगर 2nd trimester से, जैसे मैंने बोला 3rd, अगर आप 2nd trimester से already आप exercises और आपकी certain group of muscles already आप train कर रहे हैं, तो आपका 3rd trimester comparative to the non-exerciser and non people who are not under some expert, comparatively easy होगा आपके लिए. बिकॉज जो certain exercises और certain योगा के आसन्स है which we need to be prepared during your last trimester to get into the labor, easy labor. जैसे हम लोअर बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, हम लोअर बॉडी को प्रिपेयर करते हैं at the last trimester when it comes, because we have to get the mother to prepare for the labor table, for the labor. तो उस चीज़ के लिए आपको लोअर बॉडी प्रिपरेशन के लिए, अगर आप ऑलरेडी 2nd ट्राइमेस्टर से यू हैव ज्वाइन समथिंग एंड यू हैव ऑलरेडी ट्रेनिंग दोज मसल, तो कंपेरेटिवली इट विल बी सो इजी फॉर यू टू कोप अप ड्यूरिंग द लेबर पेन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लीज 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 गो एंड हैव सम एक्सपर्ट नॉलेज टू ईज आउट योर प्रेगनेंसी. 3rd trimester में we have to go for the lower body preparation. We have the very important thing which we take the class. एक तो हम 3rd trimester में we generally take the class. I personally really like that class, is a partners training program. It's a very beautifully designed program during the antenatal session in which your partners come with you for the exercises, right? Like उसमें क्या है, देखिए उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आज आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, विच आई जनरली टेक फ्रॉम माई ओन क्लाइंट्स और माई ओन मदर्स. ये जो मेरे पास वुड बी मदर्स आती हैं, जनरली हस्बैंड्स आके बोलते हैं मैम ज़रूरत क्या है हमारी, ये लोग तो एक्सरसाइज कर रहे हैं. ऐसे मदर कैन डू एनी थिंग, अ फीमेल कैन डू एनी थिंग, बट दिस जर्नी इज ऑल अबाउट पेरेंटहुड. And it completes when both husband and wife come together and nourish the baby. And it starts from the day when you
get to know a good news that you are pregnant. So जो एक वो बॉन्डिंग होती है ना, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछा जाता है, द रोल ऑफ द हस्बैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, रोल ऑफ द हस्बैंड आफ्टर द बेबी तो सबको पता है, बीइंग अ फादर, बट रोल ऑफ द हस्बैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दिस इज द प्रेगनेंसी जर्नी. सी द ऑलरेडी फीमेल्स की बॉडी में इतने चेंजेस हैं, शी इज कैरिंग द बेबी एंड ऑल, शी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. बट आप लोग को तो कैसे समझाएंगे एज अ हस्बैंड? तो आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर, नॉट इन द फिजिकल एज वेल एज ऑफ कोर्स इन द मेंटल वे. वो एंजाइटी को शेयर कीजिए, वो जर्नी को ब्यूटीफुल बनाइए, और उस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप लोग उनका साथ दीजिए मेंटल लेवल पे, और एक what you can say on the holistic approach. I all personally मतलब believe into that. जब वो हमारी पार्टनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, उसमें जब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में एक मंत्रास चैंटिंग करते हैं एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर देयर, द मेडिटेशन पार्ट वी इंक्लूड, जो एक बॉन्डिंग होती है, एक जो वाइब्रेशंस बेबी को पहुंचते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी and fit baby, not a physically, a mentally healthy baby also. And then we prepare for the labor class. That is very very important thing. अगर आपको ये बात पता होगी कि मुझे किस तरीके से बेबी को पुश करना है, and how I have to prepare my body for the labor table, I have to prepare my mind, my body for the big day, the labor day. आपके लिए वो फेस क्लियर करना, वो जो एक मूवमेंट है उसको फेस करना बहुत इजी हो जाएगा. वी ट्रेन द वुड बी मदर्स टू हैव इनटू द ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशंस, बिकॉज ग्रेविटी जैसे सब चीज़ें नीचे खींचती है, उसी तरीके से बेबी को नीचे आने में, जिसको हम लोग अपनी मेडिकल लाइन में बोलते हैं लाइटनिंग होना. लाइटनिंग मीन्स बेबी का हेड पेल्विक बोन में इंगेज होना, जिसको बोलते हैं ना बच्चा नीचे नहीं आया, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, डॉक्टर चेक करेगी, इंटरनल चेकअप होगा. तो वी प्रिपेयर दैट टाइम टू इन्हांस दैट लाइटनिंग पार्ट, एंड जिस तरीके से किस तरह से प्लेस करना है, कैसे ब्रीदिंग होनी है. देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज देयर नोन एज लमाज ब्रीदिंग. वी practice it from, we start practicing and we start preparing a would-be mother from the first trimester onwards only for this labor के लिए. किस तरह से ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करते हुए, अपनी एनर्जी को सेव करते हुए आप पुश करते हो बेबी को, उससे आपका लेबर टाइम कम हो जाता है, आपका लेबर टाइम कम हो जाता है, आपका लेबर पेन कम रह हो जाता है, एंड वो टाइम ईज आउट हो जाता है. बहुत ईजीली आप बेबी को डिलीवर कर सकते हैं. तो दीज आर द थिंग विच हैज़ टू बी अंडरस्टैंड बाय द एक्सपर्ट, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर हाउ आई हैव टू पुश द बेबी, हाउ आई हैव टू प्रिपेयर माई बॉडी फॉर द लेबर डे, what are the things which I have to carry, how I have to take care of me after delivery, and how I have to go for the breastfeeding. breastfeeding अपने आप में एक बहुत ही लंबा और एक अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, which every mother I think has to be go through a tough time for breastfeeding, and it's a beautiful movement and a beautiful feeling also. So उन सब चीज़ों को अगर आपको एक्सपर्ट की नॉलेज से और आप प्रिपेयर होते हैं फिजिकली एंड मेंटली, तो आपकी पूरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल निकलती है एंड बहुत ईजी निकलती है. एंड बिकॉज मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट एनी डिजीज़, सो एन्जॉय योर जर्नी विद अ ब्यूटिफुल things which happening inside your body, and it's your responsibility being a female or a mother to give birth to the healthy and a physically fit baby and a citizen to the society. तो उसके लिए आपको फिट होना ज़रूरी है, not only physically, mentally only. वो हम कैसे होंगे? वो हम under a proper guidance and under a proper experience expert के अंडर होंगे. So this is the glimpse which I have discussed and shared with you today, to how these antenatal sessions and how these antenatal programs helps you by during this beautiful journey.
अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी अबाउट इट, तो यू कैन फॉलो अस ऑन हील बाय द नेम ऑफ हील टू फिट ऑन आवर फेसबुक एंड आवर इंस्टाग्राम चैनल. Go and check our YouTube channel for more information about the pregnancy posture, what are the gravity assisted position, what are the antenatal exercises which we covered. And if you want to join me, if you share with your family and friends who really want to have enjoyable and a fit and healthy journey, and you can contact me through our website www.healtofit.in. So for now, if anybody have any question about regarding this, you can write it in the comment box. We will definitely contact you back, and we will make sure to give reply to all of your anxieties, question and anything. So happy pregnancy. We see you again with the more interesting topics about the pregnancy, or if you can suggest us what you want to understand about the pregnancy, please write us to us on our comment box. Thank you.